तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है बैल चालित कोलू से तेल निकालने की प्रोसेस। बताने और दिखाने की ये जहमत ही नहीं उठाई कि आप क्या खा रहे हैं। बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ एमआरपी लगी होती है, अरे इतने का है हम ले लेते हैं, हम सोयाबीन तेल खा लेते हैं। पर कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि सही में सोयाबीन में तेल होता है। आई रेड दिस इंटरेस्टिंग लाइन समवेयर कि अगर किसी भी जगह का या क्विजीन का अगर टेस्ट पता करना है तो स्टार्ट विद द फैट और ऑयल, because different cuisine use different kind of oil in their food, and that depends on their geographical location. For instance, in India we use mustard oil in the north, south में coconut oil, west में groundnut oil, east में mustard and sesame oil, and we also use ghee. So it depends कि उस location पे क्या available है. जैसे कि नदर्न यूरोप में ट्रेडिशनली दे हैव बीन यूजिंग दिस लार्ड इज़ बेसिकली एन एनिमल फैट. सो इट डिपेंड्स कि वॉज द जोग्राफिकल लोकेशन, वो किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर सॉयल, क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ट्रेडिशनली और एंशियंट वे में कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते थे. So for instance in India we use this कोलू. So कोलू इज़ बेसिकली अ लार्ज स्केल का मोटर और पेस्टल जो कि एक वुड से बना हुआ है, दोनों चीज़ वुड से बनती है, एंड देन दे अटैच दिस कोलू विद अ बैल. तो जब बैल मूव करता है तो दिस कोलू वर्क्स लाइक ए क्रशिंग और ग्राइंडिंग मशीन, तो उससे आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. दिस इज़ नोन एज कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन, क्योंकि वुड की वजह से इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होता है, एंड दे एक्सट्रैक्ट द ऑयल एट अ वेरी लो टेम्परेचर, and that helps to retain proteins, antioxidants and nutrients, because oil is not only about fat. अगर आप किसी भी नेचुरल सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. सो ऑयल हैज़ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑल्सो. Even in other cultures from the ancient times, they were using wood crushers or the stone crushers to extract the oil, which is basically the same principle. Then moved from bell wala kolu to the machine wala kolu, which is the same thing, but instead of bell, they were using machine to extract the oil. Then moved from kolu to the expeller press, which is a metal press, and screws are used to squeeze the oil out from the seeds. But the temperatures can go really high with this unit, and that will deplete the nutrients value. But for industries, it was not enough because the yield with these technologies were only 20 to 25%. But they wanted to extract everything. So, to increase their yield or to extract everything, they started using solvent, which is basically a chemical. And for them, it doesn't matter if it is extracting any harmful compounds also. And they process it further using chemicals and heat treatment. To bleach it, they use chemicals, and to deodorize it they use really high temperature that could be around 300 to 400 degrees Celsius, which make more carcinogenic compounds. Don't you think your oil look different depending on the source from which you are extracting oil? But if you have noticed, all the refined oil looks same. It has processed so much, it doesn't have any nutrient value. It's just fat, and it might have some carcinogenic compounds also. Please, I would advise buy the cold press oil, and please buy it from your local suppliers. और प्लीज़ प्लास्टिक के बॉटल्स में मत लेके आए. जैसे पुराने ज़माने में दादी नानियाँ कनस्तर में या स्टेनलेस स्टील के डिब्बों में लेके आती थी, वैसे आप अपने लोकल सप्लायर से लेके आए कोल्ड प्रेस ऑयल. Like I said, oil is not only about fat, it has a lot of nutrient value. आप एक्सरसाइज करके अपना फैट फिर भी रिमूव कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज करके आप कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स अपनी बॉडी में से नहीं निकाल पाएंगे. द एंशियंट वे ऑफ ईटिंग इज ऑलवेज हेल्दी एंड सस्टेनेबल. फॉर इंस्टेंस घी, वी हैव बीन यूजिंग घी सिंस एजेस, and there was a study at one time ghee is unhealthy, stop eating ghee. But now suddenly ghee is healthy. It is available in all the supermarkets in US. People are eating ghee with their pancakes and coffee. Ghee is lactose free and it has all these benefits. Same sort of study happened with mustard oil. Mustard oil is banned in US and in some of the countries in Europe for eating because of its high uric acid content. But now people they are debating if those studies are valid, because those studies happened long time back, and if mustard oil is really unhealthy. The problem is whatever is available in these countries, and if they are not importing it, then it's healthy. US is the biggest importer of mustard.
they are using mustard seeds and yellow mustard as a sauce. Similarly, US is the biggest importer of olives, and they say don't use extra virgin olive oil for frying, which is basically the cold press oil where they are getting less yield. But in Middle East and in Europe, they have been using extra virgin olive oil for frying. And in some of the countries, longest living or the oldest people are still living there. So why do we want these commercial companies to tell us what to eat, where they are there only to make money? So stop listening them, start tasting your oil, go back to your ancient way of eating.